तो हम आपको बता रहे थे कि लोगों में पीएम के आगमन को लेकर कितना उत्साह है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि और लोगों का क्या कुछ कहना है। यहाँ पे उत्साह है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। 22 जनवरी को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया और वापस वो अबू धाबी आ रहे हैं 14 फरवरी को। और उससे पहले एक बड़ा इवेंट हो रहा है। मैं चाहूंगा अपने वीडियो जल्दी से सबसे पहले एक व्यू दिखाएं इस पूरे स्टेडियम का। जी हाँ, भारत हर जगह मौजूद है, वो चाहे वो हिंदुस्तान हो या अबू धाबी। आप देख सकते हैं लोगों के उत्साह से ये अबू धाबी की वो जनता, जो भारतीय जनता यहाँ पे बैठी है, जो मोदी जी के विषय में किस प्रकार से उनके बारे में उनकी क्या सोच है, आप इस भव्यता से समझ सकते हैं। और मात्र 2 दिन बाद आप सारे दर्शकों के साथ आप इस कार्यक्रम में देखेंगे। इसी स्टेडियम में वो भव्य कार्यक्रम होगा। हर हर मोदी जो बात कही गई थी 2014 में आने के बाद, वो आप सीधे उनको देख पाएंगे। हमारे साथ इसी संदर्भ में यहाँ के एक व्यक्ति है, FNB हेड है, जो इस पूरे कार्यक्रम के बारे में आपको बताएंगे। सर, क्या प्रोग्राम है 13 तारीख को? क्या चर्चा है? पूरे विश्व में चर्चा हो रही है आखिरकार हेलो मोदी क्या है, इसके बारे में बताएं। देखो, 13 तारीख को ऐलान मोदी प्रोग्राम जो अरेंज किया हुआ है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जो 7वीं बार यहाँ पे आ रहे हैं और पहली बार अबू धाबी में शेख जायद स्पोर्ट्स सिटी में आ रहे हैं। तो वी आर ऑल वेरी 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 एंथुजियास्टिक अबाउट इट। आप देख रहे हो पब्लिक कैसे एंथुजियास्टिक है, आपने प्रोसेशन भी देखा होगा। एंड वी आर ऑल रेडी टू रिसीव हिम विथ फुल कोऑपरेशन, फुल हार्ट। तो आप देख सकते हैं ये है अरेंजमेंट। यहाँ पे तमाम और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आप यहाँ भारतीय वेशभूषा में, सबसे बड़ा तो अच्छा लग रहा है कि हम अबू धाबी में भारतीय वेशभूषा में देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये क्या कार्यक्रम है, हमारे दर्शकों को बताएं। So this is actually a tribute to our Prime Minister who has done so much for our country, and also thankful to the UAE for giving us this opportunity to live here and to work here and to be Indians here. So we have almost 800 to 1,000 participants taking part for this event, and we are also excited the cultural part of the event. Of course, the audience is around more than 65,000, but all over the world people are going to watch our show, and we are also excited to welcome PM on 13th. तो आप देख सकते हैं उत्साह जबरदस्त है। जी हाँ, यह वो भव्य स्टेडियम जहाँ पे 2 दिन बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएई के अंदर यहाँ के सरकार के साथ मिल करके जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कोई दिल्ली का स्टेडियम नहीं है, ये अहमदाबाद का स्टेडियम नहीं है, ये अयोध्या नहीं है, ये यूएई में अबू धाबी में आप देख सकते हैं। आप देखिए इस भव्यता को, और 13 तारीख को इस भव्यता को आप और प्रमुखता से देख पाएंगे। मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, अपनी वीडियो जर्नलिस्ट अपना चारण के साथ अबू धाबी यूएई से। सर, प्लीज अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए और ऐलान मोदी क्या होने वाला है इसके बारे में बताइए। This is actually, it's going to held on 13th February, and before and after that, you know, the Ahlan Modi and our Prime Minister, great Prime Minister, is going to open the temple, Bats temple. The temple is going to be inaugurated on 14th, and this is the 7th time he is coming, and even in no Prime Minister has come to UAE and the Middle East countries until the 2015. He is the he is the first Prime Minister to come to UAE, and 7th visit, people are really eager and excited to see this film. And even since morning, even drizzling, what are the barishes happening here, and we have almost 1,000 people, more than 2,000 people, who is going to take the responsibility to take care of 65,000 people crowd. And especially we should be always thankful to Modi ji, because because of Modi, throughout India, throughout the world, we can say we are Indians today. Working and all over the world. And second thing, we should always thankful to the UAE ruler, the only the king of UAE. He has given a land to construct a Hindu temple. 15 years free land. Again, they have donated another 15 acres, which is free for the parking. So totally 30 acres. It's much bigger, even if you can say anywhere in the Middle East. It's as on today, which never happened before. Maybe you can say in never before, never again. तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर, आपके पास भी आ रहे हैं। सर, आप बताइए आप कहाँ से हैं प्लीज, और आप अपनी जो भी भाषा में बात करना चाहें। 13 तारीख के कार्यक्रम के बारे में बताएं। जी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम हेमंत, मैं दुबई से आया हूँ, and I have been working here for 12 years, and this is my first experience as the volunteer here. It's a great moment of pride for all of us, because
this is a country of tolerance in United Arab Emirates, and as a part of the country's tolerance, this is the first time that we are going to have such a wonderful temple that is going to be inaugurated in Abu Dhabi. As a Hindu, I am very proud that Mr. Modi has made this happen, and also I would like to take this opportunity to say that this is a great moment of demonstration that we are a country of integration, and we are extending our country of integration towards outside of India also, especially in a country like United Arab Emirates and Middle East. This is the 7th time he's coming. He's made us so proud. It has been long that we have been hearing that India is a developing country. It is time that in the 3rd term, as per all the mood of the nation and polls that are coming out, Mr. Modi, when he comes back, we as in this generation and the younger generation are very, very confident that India will be now called a developed country, not a developing country in this 3rd term. In the next 5 years, his vision and all his machinery will work towards his success, and we look forward to really seeing many more proud moments like this as an Indian staying outside of India. थैंक यू। और हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में अगर अपनी बात रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि हम देश के हर हिस्से में चाहते हैं कि ये बात पहुँचे कि कितना भव्य आयोजन यहाँ होने जा रहा है। क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से और क्या कहना चाहेंगे आप? నేను రామారావు అండి, తెలంగాణ నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. నా యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ నేను తెలుగులో చెప్పదలుచుకున్నాను. మనందరికీ తెలుసు ప్రధానమంత్రి గారు ఎంత గొప్పవారు, ఆయన ఎంత చేస్తున్నారు ఇండియాకి అనేది మనందరికీ తెలుసు. ఇండియాకి యూఏకి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ చాలా 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 అభివృద్ధి చేశారు. ఇప్పుడు మనం టెంపుల్ని కూడా ఇక్కడ చూసుకోగలుగుతున్నాం. అంటే అది ఆయన కృషి మాత్రమే. అది కాకుండా ఈ 5వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉన్న దాన్ని 3వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా చేయడానికి చాలా కృషి జరుగుతుంది. దీంతో పాటు ఇది చాలా 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 గొప్ప విషయం. అందరూ ఆయనకు స్వాగతం పలుకుతున్నారు. దాంతోపాటు